हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखा हिस्ट्री मैराथन क्लास। जदि आपण एसएससी ओएसएससी ओडब्ल्यूएसएससी ओपीएससी रेलवे टीचिंग जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछनी निश्चित भाव में आपण मन को हेल्पफुल रहिबो। देखंतु ए हिस्ट्री मैराथन क्लास उद्देश्य होची जहाँ नोटिस आम जानी पाइलु जे आरआई आपनकर गोटे परीक्षा तापर अपन स्किल टेस्ट हम ता अर्थ आप गोटे परीक्षा क्रैक करिक आपण जॉब टी पाई परिबे। तेणु आमर आम मोटिव है प्रायतः गोटे दिन गोटे दिन आम ना मैराथन क्लास आनिबु। एते कौन ना आपण कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हला बेले आम क्लास आनिछु। बारंबार परीक्षा जो प्रश्न पड़ुची से आम आलोचना करवा। 60टा बछा बछा प्रश्न ता सहित विवृत्तिमूलक उत्तर जहाँ बुझार आपण मान सहज हम। तेणु समस्ते प्रथमे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करनियंतु है। तेणु आरआई परीक्षा आम जदि भावी नियंतु आपनकर एप्रिल मे जून बेलू हम परीक्षा एबेठू आम जब मैराथन कर चलवा निश्चित भाव में सब क्वेश्चन कवर कर देथिबा आ किछि बाकी रहिबनी आम आराम से परीक्षा क्रैक कर परिबा है। तेणु चलतु स्टार्ट करिया मैराथन क्लास। हेलो पिला माने बहुत बड़े इनफॉरमेशन हम पाखरे अछि जे हमर आम पाखे ना आर्यांतर स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोटा कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी हेरिटेज एंड कल्चर तार एबे अवेलेबल हो जाए। आपण मन चाहिए आपण मन एटा को बहुत भल भाव पढ़ी एग्जाम क्रैक कर पारे केमिति देखो कहूँ। एटा हूँ आपंकर मेरिट बूस्टर कंटेंट है प्रिपेयर बाय टॉपर एंड एजुकेटर इजी फॉर टाइम सेविंग एंड रिवीजन बुझिपारे बहुत आपन टाइम सेव हम आप रिवीजन भी हम। सेकेंड गला कौन सी मल्टीपल बही किसी धरिया दरकार नहीं। एटे भल जिन कौन है नोट अच्छी इमेज एंड इन्फोग्राफिक्स अच्छी आपनकर एक्यूरेट फैक्ट्स भी अच्छी आपण एग्जाम हॉल डिमांड को क्वेश्चन पड़ी छोड़ा भी आपण हाइलाइट है। मेमोरी बूस्टर माने माइंड मैप भी अवेलेबल अच्छी बुझिपारे। तेणु आपण ये जो सिलेबस देजी ताको ऊपर संपूर्ण भाभी चिंदी से माने ए बहीटी बनैचंती रिवीजन पर्पज रे है। नेक्स्ट देखिबे आपण देखंतु टोटल कह गले ये 34 ये होचे बेसिक इनफॉरमेशन ओडिशा एटा होचे 35 टा टोटल चैप्टर रही है। आपण माने देखंतु एठी रेड कलर रे आपण को पेड कंटेंट अछि आ ग्रीन कलर रे आपण को फ्री कंटेंट अछि। मो बहुत गुडे फ्री कंटेंट आपण को पढे देछि हला ऑलरेडी गोटे वीडियो आपण आगो को इनफॉरमेशन देबी गोटे पढेछि डिटेल रे हला। जोटा पेड कंटेंट अछि आपण माने पेड को भी एक्सेस कर परिबे। किमति एक्सेस करिवे तार मो इनफॉरमेशन अछि ता सहित किछि एडिशनल बोनस भी दोछि। देखंतु टोटल कंटेंट आपनकर 15 आवर हबो हला ओडिशा सिलेबस पटा 100% कवर हो जिवो। आपण एई गुटे परीक्षा ने ओएसएससी सीजन ले आगु जे कोन से एग्जाम आसीबो ओपीएससी एसो भी आसीबो बहुत गुटे एग्जाम आसीबो ता पे आपण हेल्पफुल रहिबो बुझ पाले नै। सेकंड कथा कोन देखंतु वीडियो रेडी हे के अछि टोटल 35 चैप्टर रा हला केवल मते अपलोड करिवार अछि किंतु सेडा सब अपलोड बा आपनकर प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे केबे मध्ये पब्लिक होबनी हला। जोडा फ्री अछि सेडा आपण पब्लिक हे रहबो आपण देख परिबे केमती रहउछि। देखंतु आपनकर समरी जेतबे आपन क्लास हो जिवो समरी नोट म दे देबी 12टा एमसीक्यू आपन को 35 डेज पे मिलिबो माने 35 डेज आ 12 एमसीक्यू इज इक्वल टू 420 टा एमसीक्यू मिल गला आपन को। ओडिशा 360 डिग्री ई बुक फ्री रे मिलिबो आपन जोटा कि कॉस्ट होछि 50 रुपीस बट एटा फ्री मिलिबो। 35 वीडियोज प्राइवेट यूट्यूब एक्सेस मिलिबो आपन को ना तापर बाकी रहला प्राइवेट टेलीग्राम एक्सेस मिलिबो क्विज एंड नोट्स पे मिलिबो। आपन टोटल प्राइस होछि 70 रुपीस बट 50% डिस्काउंट हे 35 रुपीस माने गुटे वीडियो कॉस्ट टंकाटे माने गोटे छुआ मध्ये अफोर्ड करि परिबो हला। आपण क्यूआर कोड स्कैन करके मते ए नंबर व्हाट्सएप कले मो आपण जे देखि वेरीफाई पेमेंट करबी आपण मते स्क्रीनशॉट सेंड करबी मो आपण स्क्रीनशॉट सेंड करबी करसला पर आपण माने निजे सब एक्सेस कर परिबे हला। देखंतु ऑलरेडी मो गोटे क्लास नै जे 7 घंटा 34 मिनिट रो एटा सब मैक्सिमम प्ले देख सारणी आ बहुत जण परचेज भी कर सारणी से माने बहुत हैप्पी होछंदी जे कंटेंट भलो अछि बोली हला। ठीक अछि आपण मन चाहिले भी आपण माने परचेज कर परिबे पेड वीडियो आपण ए एग्जाम में बहुत गुड एग्जाम पे हेल्पफुल होबो। हमर ओएससीजी को सिलेबस धरि चलंतु किंतु बहुत गुड एग्जाम आपण हेल्पफुल रहबो हला। आज जति ए कंटेंट भल लागला निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन है आपन सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए राजकोट बी है मेरठ सी है बरेली डी है चंपारण। यहाँ आप माने पूरा इजी जानी क्वेश्चन टाइम वेस्ट करवानी मेरठ है
आंसर कौन दूसरी ना मेरठ द सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ द सिपाही म्यूटिनी वाज इन ए वायलेंट एंड वेरी ब्लडली अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग डी है वेलेस्ली सी है डेलहाउसी डी है कैनिंग यार आंसर हम आपंकर लॉर्ड कैनिंग कहीं लॉर्ड कैनिंग द इंडियन म्यूटिनी ऑल्सो कॉल्ड सिपाही म्यूटिनी और फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस तीन मन रखी था इंडियन म्यूटिनी गोटे सेकेंड कहते सिपाही म्यूटिनी कहते फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस भी कहते ताहले वाइड स्प्रेड बट द अनसक्सेसफुल रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857-59 Sepoys in the presidency of Bengal revolt against their British officers. Charles Canning was the Governor General of India during the rebellion. Lord Dalhousie, the Governor General of India from 1848 to 1856, who divested the doctrine of lapse. which पहले डिटेल में बुझेली. Third question: Who among the following was appointed as the first Viceroy of British India? Option A Lord Canning, B Wavell, C Irwin, D Mayo. यार आंसर आपंकर से लॉर्ड कैनिंग ठीक अच्छे केमती ना फास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वारेन हेस्टिंग यार डिटेल सब जिन अच्छी किए कौन कौन अच्छा डिटेल देला तेणु मन रखिले आप गोटे इजीरे आइडिया हो किए कौन कौन फास्ट होते ठीक अच्छे कि लास्ट होते. नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन ऑप्शन ए इलाहाबाद ऑप्शन बी बनारस ऑप्शन सी कलकत्ता ऑप्शन डी बैरकपुर. हाँ आंसर जानते ऑप्शन बैरकपुर बहुत इजी क्वेश्चन है. मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन बैरकपुर. द प्राइमरी रीजन फॉर बिहाइंड मंगल पांडे's बिहेवियर वाज बिकॉज ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ बुलेट कैट्रिज यूज्ड इन द एनफील्ड P53 राइफल. एक्चुअली जो राफेलटा था से भितर कौन 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 समथिंग बीफ ना आपणकर जो एनफिल्ड था से कौन पिग ना आइदर केमती कौन गोटे चर्बी से ये से कार्ड से पार्टी काटिकी से कार्डिज भर्ती करा पड़ा तेणु से कौन ना विरोध कले तेणु से गोटे सी पोजिशन आसला मंगल पांडे जोटा से हैंग्ड हेले इन 1857 ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन आसला हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार. बिहार किए थे ऑप्शन ए अच्छी बहादुर शाह बी है नाना साहेब सी है मौलवी अहमदुल्ला डी है कुंवर सिंह. आंसर जानते ऑप्शन डी हम कुंवर सिंह ठीक अच्छे. डिटेल जान दबा कुंवर सिंह led the Indian rebellion of 1857 in Bihar at the age of 18. He led a select band of the armed soldiers against the troops under the commands of the British East India Company. He was the chief organizer of the fight against the British in Bihar. He is popularly known as the Veer Kunwar Singh. कुंवर सिंह अन्य नाम ही वीर कुंवर सिंह ठीक अच्छे मन रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 which of the following changes was not made by the British government. ऑप्शन ए हूँ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया was appointed. Option B the number of Indian soldiers was increased in the British Army. Option C the rights of the East India Company were handed over to the British Empire. D the Governor General of India became the Viceroy of India. ये आंसर अब आपणकर B कहीं मोर आंसर B के डिटेल देखिए. The number of Indian soldiers were increased in the British Army. The Indian Army was carefully recognized after the 1858. Some changes were made necessary by the transfer of power to the crown. The domination of the army by its European branch was carefully granted. Next question asila who among the following was not associated with the revolt of 1857. किए ना कुंवर सिंह बेगम हजरत महल मंगल पांडे भगत सिंह. तेणु ऑप्शन आप गेस करेंगे तीन जन गला तो आप जानी ए बी सी डीटा ना भगत सिंह 1857 ना से लेटर आसले पर आसले तेणु आंसर हम डी
Bhagat Singh was not associated with the revolt of 1857. बहुत easy question. That's NTP से पढ़ी साची. During the 1857 uprising, who among the following took up the leadership of Hyderabad? ठीक पढ़ाटा जानता हो. कुंवर सिंह, B ला मौलवी अहमदुल्ला, C ला बेगम हजरत महल, D ला खान बहादुर. ऑप्शन आंसर है मौलवी अहमदुल्ला. एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जानिबा. अहमदुल्ला शाह born in 1787, more famously known as Maulavi of the Faizabad, was one of the leading figures of the Great Indian Revolt of 1857. In the Awadh region, Maulavi Ahmadullah Shah was known as the lighthouse of the rebellion. तेणु बेले बेले टिके बुले क्वेश्चन पचार दीजिए who was known as the lighthouse of the rebellion. ताले आंसर कौन रहे अपना अहमदुल्ला शाह. बुझ पाइले. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें. In which of the following years did the revolt in the countryside of the Bombay Deccan occur? Bombay Deccan occur केबे हितला. बुझ पाइले. ऑप्शन ए 1905, 1890, 1790, 1850, 1875. आंसर हो आपण 1875. The revolt in the countryside of the Bombay Deccan occurred in 1875. The purpose of the revolt was to obtain and destroy the bonds, decrees, and the other document in possession of the money lenders. Then 10 number question देखिए. Who among the following was one of the leaders of the Santal rebellion? ऑप्शन ए सिंधु माझी, ऑप्शन डी सूर्य सेन, ऑप्शन सी बी आर आंबेडकर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद. देखो चार्टा ऑप्शन भितर सांताल रेबेलियन गोटे एमती रेबेलियन था प्रायतः आप कौन सी बही टे डिटेल पाइबनी. बट सांताल रेबेलियन उपर जब देखा आम ताले स्वामी विवेकानंद को आग काटा चेष्टा करें. सी नथिले. तापर बी आर आंबेडकर सी भी नथिले. सी बहुत लास्ट को आसुनी केवल कन्स्टिट्यूशन बनवारे. सूर्य सेन सिंधु माझी टी कन्फ्यूजन आसो. बट आम जदि देखा माझी कम्युनिटी ही सांताल रेबेलियन पाई तेणु सिंधु माझी ही आंसर. आंसर हम ए. तेणु देखा डिटेल विषय टी. सिंधु माझी was one of the leaders of the Santal rebellion. Sindhu Murmu and Kanu Murmu were the brothers and the leaders of the Santal rebellion, which started in 1855 in the present day Jharkhand and the Bengal in eastern India against both the British colonial authority and detail जानी पारे. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा. The Indian mutiny began from Meerut on 10th May 1857 and ended in केवे इतला बोली क्वेश्चन करछि. ऑप्शन ए ग्वालियर on 20 June 1858, कोलकाता on 13 May 1858, दिल्ली on 18 September 1859, झांसी on 15 August 1860. यार आंसर अब आपनकर ए ग्वालियर on 20 June 1858. कमती द इंडियन म्यूटिनी which began from the Meerut on 10th May 1857 ended in Gwalior on 20 June 1858. ठीक अच्छे. आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला. डैश वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. एटा एसएससी सीची साल क्वेश्चन आसला. कौन ना बहादुर शाह 1, शाह आलम 2, बहादुर शाह आलम 2, अकबर 2. तेणु क्वेश्चन टी इम्पोर्टाट रोचे. ठीक अच्छे. आंसर देखा आम सी बहादुर शाह आलम 2. बहादुर शाह आलम 2 was the Mughal emperor during the revolt of 1857. The dash Indian mutiny of 1857 effectively ended in the city of ऑप्शन ए ग्वालियर, बी अमृतसर, सी लखनऊ, डी बड़ोदरा. आंसर है ग्वालियर. द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 effectively ended in the city of Gwalior. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Whose proclaimed of November 1, 1858 declared that thereafter the Indian would be governed by and in the name of the British monarch through a Secretary of the State. King Louis, King Philip, Queen Victoria, Queen Elizabeth. आंसर अब आपन ऑप्शन सी Queen Victoria. The Queen Victoria's proclamation of
November 1, 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of the British monarchs through a Secretary of State, who shepherded the revolt of 1857 rebellion in Bihar. Tantiya tope Nana Sahib Kunwar Singh Bakt Khan. Answer of Kunwar Singh. Already discussed earlier, Kunwar Singh shepherded the revolt of 1857 rebellion in जगदीशपुर जोटा कि जगदीशपुर बिहार लखनऊ रे थिले हमर बेगम हजरत महल दिल्ली रे थिले बहादुर शाह टू एंड भक्त खान थिले बाराकपुर रे मंगल पांडे थिले एवं झांसी रे रानी लक्ष्मीबाई थिले कानपुर रे तांतिया टोपे थिले एटा मन रखतांतो एटा डायनेस्टी रे क्वेश्चन पडिबो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज बहादुर शाह टू deposed by the British and exiled to the Rangoon. ऑप्शन आपन पाखे अच्छी ठीक चिंता करी आंसर कहतु ठीक अच्छे आंसर होची आपनकर सी 1857 इन 1857 बहादुर शाह टू वाज डिपोज्ड by the British and exiled to Rangoon. Bahadur Shah II was the last Mughal emperor. Rangoon is the old name of the city Yangon, former capital of Myanmar. Who among the following was the appointed as the first viceroy of British India? Option A, Lord Canning, Lord Wavell, Lord Irwin or Lord Mayo. Answer A, Lord Canning. After the 1857, where the British Parliament directly transferred to the power of the East India Company to the Crown, hence the Queen Victoria became impressed of the Indian, and Lord Canning, who was the Governor General in 1857, were become the first Viceroy of the India, the last Viceroy of India, Lord Louis Mountbatten. ठीक है आंसर जाने पहले तापर क्वेश्चन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेडिंग, डेलहाउसी और कैनिंग. आंसर आपको लॉर्ड हेडिंग. Lord Hardinge was the Governor General of India during the first Anglo-Sikh War. The first Anglo-Sikh War was fought between the Sikh Empire and the East India Company between 1845 and 1846. It resulted in the partial subjection of the Sikh Kingdom and the cessions of the Jammu and Kashmir as a separate princely state under the British subjugated. ठीक है. Next question is who was the then Governor General of the British India when Sati Pratha became the illegal and punishable? Lord Cornwallis, Wellesley, William Bentinck, Warren Hastings. Answer आपन सी Lord William Bentinck. एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार-बार पढ़े. Lord William Bentinck was the Governor General of the British India when Sati Pratha became illegal and punishable. William Bentinck, along Raja Ram Mohan Roy, is given the credit of the abolishment of the Sati Pratha and declaring it as a crime. It was abolished in 1829. Next question, जो last question है, which of the following Viceroy of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supply to the starving rural Bengals? Lord Wavell, Mountbatten, Wellington or Lord Linlithgow? Answer of Lord Linlithgow. Detail देखिएगा. Lord Linlithgow was the Viceroy of India during the Bengal famine 1943. He distributed relief supply to the rural Bengalis. It is believed that the Bengalis famine of the 1943, which is estimated to have killed of the 3 million people, was not caused by dirt, but instead was a result of complete policy failure of the then British Prime Minister Winston Churchill. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत. आज हम देखिबा हिस्ट्री मैराथन क्लास. जदि आपण एसएससी, ओएसएससी, ओएसएससी, ओपीएससी, रेलवे टीचिंग जे कोनोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछनी, निश्चित भाबरे आपण मन को हेल्पफुल हो रहिबो. देखंतु ए हिस्ट्री मैराथन क्लास उद्देश्य होची
जहाँ नोटिस आम जापारू जे आरआई आपंकर गोटे परीक्षा तापर आप स्किल टेस्ट हम ता अर्थ आप गोटे परीक्षा क्राक करके आप जॉब टी पाइपर तेणु आमर आम मोटिव है प्रायतः गोटे दिन गोटे दिन आम ना मार्चन क्लास आणबू एते कौन ना आप कनसेप्ट क्लिस्टर क्लियर है भाई आम क्लास आणु बारंबार परीक्षा जो प्रश्न पड़ूँ से गुड़ा आम आलोचना करवा 60टा बछा बछा प्रश्न ता सहित विवृत्तिमूलक उत्तर जहाँ बुझे आपण मान सहज हम तेणु समस्ते प्रथम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करनियंतु है तेणु आरआई परीक्षा आम जदि भावी नियंतु आपंकर एप्रिल मे जून बेलू हम परीक्षा एबेठू आम जब माराथन कर चलवा निश्चित भाव में सब क्वेश्चन कवर कर देथिबा किसी बाकी रही आम आराम से परीक्षा क्राक कर है तेणु चलतु स्टार्ट करिया माराथन क्लास। हेलो पिला माने बहुत बड़े इनफॉरमेशन आम पाखरे अछि जे हमर आम पाखरे ना आर्यांतर स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोटा कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी हेरिटेज एंड कल्चर तार एबे अवेलेबल हो जाइए आपण मन चाहिए आपण मन एटा को बहुत भल भाव पढ़ी एग्जाम क्रैक कर पारे केमिति देखंता कहूँ एटा होची आपनकर मेरिट बूस्टर कंटेंट है प्रिपेयर बाय टॉपर एंड एजुकेटर इजी फॉर टाइम सेविंग एंड रिवीजन बुझी पाले बहुत आपनकर टाइम सेव हो आपनकर रिवीजन भी हो सेकंड गला कौन सी मल्टीपल बही किसी धरिया दरकार नहीं एते भल जिन कौन है नोट अच्छी इन्फोग्राफिक्स अच्छी आपनकर एक्यूरेट फैक्ट्स भी अच्छी आपण एग्जाम हॉल डिमांड को क्वेश्चन पड़ी छोड़ा भी आपण हाइलाइट है मेमोरी बूस्टर माने माइंड मैप एठी अवेलेबल अच्छी बुझी पाले तेणु आपण ए जो सिलेबस देजी ताको ऊपर संपूर्ण भाभी चिंदी कि से माने ए बहीटी बनैचंती रिवीजन पर्पज रे हला नेक्स्ट देखिबे आपण देखंतु टोटल कह गले ये 34 ये हो बेसिक इनफॉरमेशन ओडिसा एटा हो 35 टोटल चैप्टर रही है आपण मैंने देखो ये रेड कलर आपन पेड कंटेंट अच्छी आउ ग्रीन कलर रे आपन फ्री कंटेंट अच्छी बहुत गुड़े फ्री कंटेंट आपन पढ़े देछि ऑलरेडी गोटे वीडियो आपन आगो को इनफॉरमेशन देबी गोटे पढ़े डिटेल है जोटा पेड कंटेंट अच्छी आपण मैंने पेड को भी एक्सेस कर परिबे केमती एक्सेस करिवे तार मो इनफॉरमेशन अछि ता सहित किछि एडिशनल बोनस भी दउछि देखंतु टोटल कंटेंट आपन 15 आवर हबो हला ओडिशा सिलेबस पता 100% कवर हो जिवो आपण एई गुटे परीक्षा ने ओएसएससी सीजन में आगो जे कोन से एग्जाम आसीबो ओपीएससी एसो भी आसीबो बहुत गुटे एग्जाम आसीबो ता पे आपण हेल्पफुल रहिबो बुझ पाले नै सेकंड कथा कोन देखंतु वीडियो रेडी हे के टोटल 35 चैप्टर रा हला केवल मते अपलोड करिवार अछि किंतु सेडा सब अपलोड आपण प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे केबे मते पब्लिक होबनी हला जोडा फ्री अछि सेडा आपण पब्लिक के रहबो आपण देख परिबे केमती रहउछि देखंतु आपनको समरी जेतबे आपण क्लास हो जबो समरी नोट म दे देबी 12टा एमसीक्यू आपनको 35 डेज पे मिलिबो माने 35 डेज आ 12 एमसीक्यू इज इक्वल टू 420टा एमसीक्यू मिल गला आपनको ओडिशा 360 डिग्री ई बुक फ्री रे मिलिबो आपनको जोटा कि कॉस्ट होछि 50 रुपीस बट एटा फ्री मिलिबो 35 वीडियोज प्राइवेट यूट्यूब एक्सेस मिलिबो आपनको ना तापर बाकी रहला प्राइवेट टेलीग्राम एक्सेस मिलिबो क्विज एंड नोट्स पे मिलिबो आपन टोटल प्राइस होछि 70 रुपीस बट 50% डिस्काउंट है 35 रुपीस माने गुटे वीडियो कॉस्ट टंकाटे माने गोटे छुआ मध्य अफोर्ड कर परिबो हला आपन क्यूआर कोड स्कैन करे नंबर व्हाट्सएप कले मो आपन जे देखि वेरीफाई पेमेंट करबी आपन मते स्क्रीनशॉट सेंड करबी मो आपन स्क्रीनशॉट सेंड करबी करसला पर आपन माने निजे सब एक्सेस कर परिबे हला देखंतु ऑलरेडी मो गोटे क्लास नै जी 7 घंटा 34 मिनिट रो एटा सब मैक्सिमम प्ले देख सारणी आ बहुत जण परचेज भी कर सारणी से माने बहुत हैप्पी होछंदी जे कंटेंट भलो अछि बोली हला ठीक अछि आपन मन चाहिले भी आपन माने परचेज कर परिबे पेड वीडियो आपन ए एग्जाम में बहुत गुड एग्जाम पे हेल्पफुल होबा हमर ओएससीजी को सिलेबस धरि चलन किंतु बहुत गुड एग्जाम आपन हेल्पफुल रहबा हला आज जति ए कंटेंट भल लागला निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच The following guys are appointed the Hunter Commission in 1882 ए क्वेश्चन आपन को मान को मो लास्ट वीडियो देथिली आपन माने को कहितली जे ठीक आंसर कमेंट सेक्शन देबे तनो जो माने देइछन ताको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जदि आपन मान आंसर ठीक अछि तला हम गुटे हार्ट आपन को दे देबो आपन आंसर हार्ट उड दे देबो आपन माने आंसर जानि परिबे आपन को ठीक अछि ने तनो चलो त क्वेश्चन डिस्कशन करबा कोन हो तनो क्वेश्चन डिस्कशन करला आलो ए आंसर होछि आपन को ऑप्शन डी कौन ऑप्शन डी द हंटर कमीशन ऑफ
1882 was presided by Sir William Hunter and was appointed by Lord Ripon, the Viceroy of India. The Hunter Commission was constituted on 3rd April 1882 after a request of the General Council of Education was made to Ripon. बुझिपारे क्वेश्चन बहुत बड़ी पड़े परीक्षा रे. सेकंड क्वेश्चन देखिबा तो सती प्रथा वाज abolished under the Governor Generalship of कहा द्वारा. तेणु ऑप्शन अच्छी आपण माने ठीक आंसर करियो चेष्टा करंतु. दुईटा ऑप्शन आपण इंपोर्टेंट जोडे जानि चंदी सेटा होची लॉर्ड विलियम बेंटिंग आ मेट कैफे. ठीक अछि. तेणु टिके आंसर देखिबा. आंसर अब आपण लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऊपर एटा ऑप्शन रे एते ये नहीं कि आपण माने एटा जो ऑप्शन अछि लॉर्ड ए एम बी एलिमिनेशन करबे एते तांकर किसी अवदान नहीं. ठीक अच्छे. तेणु दुईटा जानले भल आप आंसर करेंगे. देखो कौन देखिए द सती प्रथा वाज abolished under the Governor Generalship of Lord William Bentinck. The sati pratha was abolished in 1829. He had worked for the upliftment of the women's position in society. ठीक अच्छे. ये होचे पूरा डिटेल जिनसटा एक्सप्लेनेशन करदेली. Next, who was the Governor General of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793? Option A Warren Hastings, Sir John Surrey, John Macpherson, Lord Cornwallis. आर आंसर अब आपनकर लॉर्ड कॉर्नवालिस. केमती ना लॉर्ड Cornwallis was the Governor General of India when the Permanent Settlement Act was introduced. It was introduced in 1793 CE. Okay, next question देखिबा. Who among the following is popularly known as the father of civil services in India? एटा बहुत तरह पढ़ी परीक्षा रे. तेणु आमे टिके जदि आमे बही पढ़िथिबा निश्चित भाबे दीटा ऑप्शन को आमे टिके जानि परिबा लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग हेते पारे. तेणु आंसर कोन हो? आंसर अब लॉर्ड कॉर्नवालिस. केमती Warren Hastings is credited for laying the foundations of the civil services in India, while it was Charles Cornwallis who reformed and modernized the inner working of the civil services. For his efforts, Charles Cornwallis is known as the father of civil services in India. मुझे पहले आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. Who was the first Governor General of British India from 1773 to 1785? ठीक अच्छे. ऑप्शन अच्छी सर जॉन सरे, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली. ऑप्शन नंबर वारेन हेस्टिंग्स. Warren Hastings was the first Governor General of India from 1773 to 1785. ठीक अच्छे. तापर क्वेश्चन नंबर 6. The dash was a group of 7 members of parliament from the United Kingdom constituted to suggest constitutional reform for British India. ऑप्शन नेला फार्सर कमिशन, हंटर कमिशन, सर्गेंट कमिशन, साइमन कमिशन. ठीक अच्छे. ऑप्शन आपण हबा साइमन कमिशन. अब कहेंगे वो आंसर Simon Commission. The Indian Statutory Commission, also known as for the Simon Commission, was a group of the 7 members of the British Parliament under the chairmanship of Sir John Simon. The Simon Commission arrived in Indian subcontinent in 1928 to study the constitutional reform in British India. Which पहले. Second number question. Which of the following was the most important characteristic of India's trade throughout the colonial period? कौन है पारे? इंपोर्ट सरप्लस है पारे, इंपोर्ट डेफिशिएंसी है पारे, एक्सपोर्ट डेफिशिएंसी है पारे, एक्सपोर्ट सरप्लस है पारे. कौन है पारे? आंसर अब डी एक्सपोर्ट सरप्लस देला. किंतु a major trade characteristic of a trade in the colonial period of India was its export surplus. which पहले an export surplus is when a country exports more product than it imports from the other countries. एक्सपोर्ट माने कौन? एक्सपोर्ट माने ताको आमे पठेबा, इंपोर्ट माने आनिबा. ठीक अच्छे. तेणु आमे एक्सपोर्ट अधिका करूथलु. एक्सपोर्ट बहुत जिनस आमे इंडिया रो भारत रो बहुत जिनस पठौथलु जोटा कि अन्य देश को रिक्वायरमेंट थिला एवं इंपोर्ट कम करथलु अदर कंट्री रो. ठीक अच्छे. तापर 8 नंबर क्वेश्चन. आज ए रिएक्शन टू द रॉबलेट एक्ट डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड as नेशनल ह्यूमिलिएशन डे.
तेणु ये आपन 4टा ऑप्शन देछि आपन माने आंसर कोंतु टाइम ड्यूरेशन चलछि चलो आंसर देखा हो आंसर हम 6 अप्रैल 1990 केमती throughout the country 6 April 1919 was observed as the National Humanitarian Day. Indian Council Act of 1909 is also known as the Morley-Minto Reform. ठीक अछि During the passage of the Royal Tiles Act 1876, the office of the British Prime Minister was occupied by William Ewart Gladstone, Arthur Balfour, John Russell, Benjamin Disraeli. Our option answer of D. Benjamin Disraeli. The Royal Titles Act 1876 was an act of the Parliament of the United Kingdom which officially recognized Queen Victoria and subsequent monarchs as the Empress of India. This title had been assumed by her in 1876 under the encouragement of the Prime Minister Benjamin Disraeli. This act officially recognized Queen Victoria as Empress of India. To मन रखता तो बहुत important question है. Next question: in which year the administration of India was transferred into the hands of the British monarch by the proclamation of Queen Victoria? तेणु ऑप्शन अच्छी है 1887, 1842, 1864, 1858. Answer of 1858. On August 2, 1858, less than a month after the Canning proclaimed the Viceroy of British arms, Parliament passed the Government of India Act transferring British power over the India from the East India Company, whose ineptitude was primarily blamed for. The first complete census in India was held in the year dash. केबे हेतला 1881, 1873, 1891, 1885. Answer of 1881 हेतला केमती now in India the first census was held in the year 1872. The first complete census however was taken in the year 1881. Since then census have been held regularly every 10th year. The Indian census is the most comprehensive source of demographic, social and economic data about India. बुझिपाइले डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मु कहि दीची. Next question: in pre-independent India, the British moved the capital of India from Kolkata to Delhi in gas. एटा बहुत तरह क्वेश्चन बेटा कोलकाता टू दिल्ली केबे ट्रांसफर हैला 1911, 1921, 1921, 24, 1913. आंसर होबा 1911 हैला. During the Delhi Darbar on 12th December 1911, George V, then Emperor of the India, along with the Queen, made the announcement that capital of India shifted from Kolkata to Delhi, while laying the foundation stone of capital India in Coronation Park. इतिहास दरकार अछि आपण वीडियो रे पॉज मार के डिटेल रे आपण जानि परिबे कोन अछि डिटेल. हमको बेसी जिंस को ये करबार नाही हमको एक्सप्लोर करबार नाही हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री बहुत फैक्टर्स अछि बट जोटा मेन पॉइंट ताको जानि अछि. ठीक है नेक्स्ट दिबा India was divided into India and Pakistan by the Dash Act. এটা বহুত পরীক্ষা পড়ছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা ডিভিশন অফ ইন্ডিয়া পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স. आंसर of D India independence. केमती the partition of India was mentioned in the Mountbatten Plan. It was also known as the Indian Independence Act 1947 and was put forward by the Lord Mountbatten on the June 3rd 1947. It resulted in the creation of two independent dominions, India and Pakistan. Next question jiba the Dash Commission was set up to investigate the Jallianwala Massacre.
हंटर कमिशन, बल्टर कमिशन, साल्टर कमिशन, कैम्बेल कमिशन कौन होता है? आंसर हम आपनकर ए हंटर कमिशन। हंटर कमिशन दीजिए आफ्टर द टेरिबल मैस्करेड एट जलियांवाला बाग ऑन द 13 April 1919 the legislative council of the government of India constituted the Hunter Commission to examine the mishap that occurred there. पहले next question, the Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre, took place in Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab on dash. ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆନ୍ସର୍। जो टाइम दिया से भी ट्राए करंतु। 11 टाइम सरी गलानी। आंसर अब आपनकर ए 13 April 1990 केमती ना on 13 April 1990 British troops under the command of General Regent Dyer fired on a crowd of unarmed civilians in Amritsar following Gandhiji's call for the resistance and a one-day general strike earlier that was mounted. Protested and had broken out across the country, particularly in Punjab. Next question is which act is also as Montagu James Plot reform? कोटा हमारा को act को हमें Montagu James Plot act भी कहूँ क्योंकि Indian Independence Act 1947, Indian Government Act 1990, British India Act 1784, Charter Act 1830. कोटा ही पर आंसर अब बी Indian Government Act 1990. और आंसर दीजिए यार, the correct answer is the Government of India Act 1990. Government of India Act, also known as the Montagu James Plot reforms. The Government of India Act 1990 was based on the recommendation of a report by the Edwin Montagu, the Secretary of the State of India, and Lord James Plot. Next question देवा, which act of the British Parliament transferred the powers of the East India Company to the British Crown? Charter Act 1853, Charter Act 1835, Government of India Act 1858, Charter Act 1880. And answer was C, Government of India Act 1858. The act that transferred the power from the British East India Company to the British Crown in India was Government of India Act 1858. This was an act passed by the British Parliament on 2nd August 1858. In which province of British India was royalty system implemented to collect the revenue? North India, South India, Western India or Eastern India? से होचे आपनकर South India. This system of land revenue was instituted in the late 18th century by Sir Thomas Monro, Governor of Madras in 1820. This was practiced in the Madras and the Bombay areas as well as the Assam and Coorg provinces. Coorg province को थिला अपना south थिला. In this system, the peasants of cultivator were regarded as the owners of the land. Next question, who had given the doctrine of lapse? Lord Cornwallis, Bentinck, Dalhousie or Canning? Answer अब अपना C, Dalhousie. कौन लीजिए? Lord Dalhousie, Doctrine of Lapse in India History formula devised by the Lord Dalhousie, Governor General of India, 1848 to 1846, to deal with the questions of succession of Hindu Indian states. सब state. Next question, by last question, Indian Statutory Commission 1928 was headed by Daniel Radcliffe, Viceroy Lord Irwin, Sir John Simon, Viceroy Lord Chelmsford. Answer of Sir John Simon. The Indian Statutory Commission was also known as the Simon Commission, was a group of 7 members of the British Parliament under the chairmanship of Sir John Simon. The commission arrived in the Indian subcontinent in 1928 to study the constitutional reform in the British India. ठीक अच्छी पिला माने तेणु हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखिबा
हिस्ट्री मैराथन क्लास जदि आपण एसएससी ओएसएससी ओसएससी ओपीएससी रेलवे टीचिंग जे कोनोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछनी निश्चित भाव में आपण मानको हेल्पफुल रहिबो। देखंतु ए हिस्ट्री मैराथन क्लास रो उद्देश्य होची जहाँ नोटिस आम जापारू जे आरआई आप गोटे परीक्षा तापर आप स्किल टेस्ट हम ता अर्थ आप गोटे परीक्षा क्रैक करके जॉब टी पाइपर तेणु आमर आम मोटिव है प्रायतः गोटे दिन गोटे दिन आम ना मार्चन क्लास आणबू एते कौन ना आप कनसेप्ट क्रिस्टाल क्लियर है भाई आम क्लास आनीचु बारंबार परीक्षा जो प्रश्न पड़ुची से आम आलोचना करवा 60टा बछा बछा प्रश्न ता सहित विवृत्तिमूलक उत्तर जहाँ बुझे आपण मान सहज हम तेणु समस्ते प्रथमे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करनियंतु है तेणु आरआई परीक्षा आम जदि भाभी नियंतु आपंकर एप्रिल मे जून बेलू हम परीक्षा एवं आम जब माराथन कर चलवा निश्चित भाव में सब क्वेश्चन कवर कर देथिबा आ किछि बाकी रहिबनी आम आराम से परीक्षा क्रैक कर परिबा है तेणु चलतु स्टार्ट करिया माराथन क्लास। हेलो पिला माने बहुत बड़े इनफॉरमेशन हम पाखरे अछि जे हमर आम पाखरे ना आर्यांतर स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोटा कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी हेरिटेज एंड कल्चर तार एबे अवेलेबल हो जाय आपण मन चाहिए आपण मन एटा को बहुत भल भाव पढ़ी एग्जाम क्रैक कर परिबे केमिति देखंता कहूँ एटा होची आपनकर मेरिट बूस्टर कंटेंट है प्रिपेयर बाय टॉपर एंड एजुकेटर इजी फॉर टाइम सेविंग एंड रिवीजन बुझी पाले बहुत आपनकर टाइम सेव हो आपनकर रिवीजन भी हो सेकंड गला कौन सी मल्टीपल बही किसी धरिया दरकार नहीं एते भल जिनस कौन है नोट अच्छी इमेज एंड इन्फोग्राफिक्स अच्छी आपनकर एक्यूरेट फैक्ट्स भी अच्छी आपण एग्जाम हॉल डिमांड को क्वेश्चन पड़ी छोड़ा भी आपण एटी हाइलाइट है मेमोरी बूस्टर माने माइंड मैप भी अवेलेबल अच्छी बुझी पाले तेणु आपण ए जो सिलेबस देजी ताको ऊपर संपूर्ण भाभी चिंदी कि से माने ए बहीटी बनै चंदी रिवीजन पर्पस रे हला देखिबे आपण देखंतु टोटल कह गले ये 34 ये हो बेसिक इनफॉरमेशन ओडिशा एटा हो 35टा टोटल चैप्टर रही है आपण माने देखंतु एठी रेड कलर रे आपण को पेड कंटेंट अछि आ ग्रीन कलर रे आपण को फ्री कंटेंट अछि मो बहुत गुडे फ्री कंटेंट आपण को पढे देछि हला ऑलरेडी गोटे वीडियो आपण आगो को इनफॉरमेशन देबी गोटे पढेछि डिटेल रे हला जोटा पेड कंटेंट अछि आपण माने पेड को भी एक्सेस कर परिबे किमते एक्सेस करिवे तार मो इनफॉरमेशन अछि ता सले किछि एडिशनल बोनस भी दोछि देखंतु टोटल कंटेंट आपनकर 15 आवर हबो हला ओडिशा सिलेबस पता 100% कवर हो जिवो आपण एई गुटे परीक्षा ने ओएसएससी जले आगु जे कोन से एग्जाम आसीबो ओपीएससी एसो भी आसीबो बहुत गुटे एग्जाम आसीबो तापे आपण हेल्पफुल रहिबो बुझ पाले ने सेकंड कथा आपण देखंतु वीडियो रेडी हे के टोटल 35 चैप्टर रा हला केवल मते अपलोड करिवार अछि किंतु सेडा सब अपलोड बा आपनकर प्राइवेट YouTube चैनल रे केबे मते पब्लिक होबनी हला जोडा फ्री अछि सेडा आपण पब्लिक हे रहबो आपण देख परिबे केमती रहउछि देखंतु आपनकर समरी जेतबे आपण क्लास हो जिवो समरी नोट म दे देबी 12टा एमसीक्यू आपनको 35 डेज पे मिलिबो माने 35 डेज आ 12 एमसीक्यू इज इक्वल टू 420 टा एमसीक्यू मिल गला आपनको ओडिशा 360 डिग्री ई बुक फ्री रे मिलिबो आपनको जोटा कि कॉस्ट होछि 50 रुपीस बट एटा फ्री मिलिबो 35 वीडियोज प्राइवेट यूट्यूब एक्सेस मिलिबो आपनको ना तापर बाकी रहला प्राइवेट टेलीग्राम एक्सेस मिलिबो क्विज एंड नोट्स पे मिलिबो आपन टोटल प्राइस होछि 70 रुपीस बट 50% डिस्काउंट हे 35 रुपीस माने गोटे वीडियो कॉस्ट टंकाटे माने गोटे छुआ मध्ये अफोर्ड करि परिबो हला आपन क्यूआर कोड स्कैन करके मते ए नंबर व्हाट्सएप कले मो आपन को जे देखि वेरीफाई पेमेंट करबी आपन मते स्क्रीनशॉट सेंड करबी मो आपन स्क्रीनशॉट सेंड करबी करसला पर आपन माने निजे सब एक्सेस कर परिबे हला देखंतु ऑलरेडी मो गोटे क्लास नै जे 7 घंटा 34 मिनिट रो एटा सब मैक्सिमम प्ले देख सारणी आ बहुत जण परचेज भी कर सारणी से माने बहुत हैप्पी होछंदी जे कंटेंट भलो अछि बोली हला ठीक अछि आपन मन चाहिले भी आपन माने परचेज कर परिबे पेड वीडियो आपण ए एग्जाम ने बहुत गुड एग्जाम पे हेल्पफुल होबा हमर ओएससी को सिलेबस धरि चलंतु किंतु बहुत गुड एग्जाम आपण हेल्पफुल रहबा हला आज जति ए कंटेंट भल लागला निश्चय लाइक से सब्सक्राइब थैंक यू सो मच। Which act allowed the British government to increase the political activity and detain the political prisoners without trial for 2 years? Rowlatt Act, Albert Act, Arms Act, Vernacular Act. अपना आंसर अब ए Rowlatt Act.
Explanation कौन होची ना the Rowlatt Act 1919 gave the government enormous power to repress political activity and allowed the detention of the political prisoners without trial for 2 years. The act would thus also enable the government to suspend the right of habeas corpus, which had been the foundation of civil liberties in Britain. Question number 2. Under the which government Governor General did Britishers adopt the policy of paramountcy? Lord Dalhousie, Clive, Cornwallis or Hastings? अपना आंसर अब डी Hastings. Lord Hastings was the first Governor General of India from 1813. Under Lord Hastings, a new policy of paramountcy was introduced in India. Under this policy, the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. Third question, Ilbert Bill, a controversial measure proposed in 1883 by Dash, Lord Hastings, Ripon, Dalhousie or Cochrane. Answer अब आपणकर B. Lord Ripon. Explanation कौन कौची Ilbert Bill was a controversial measure proposed in 1883 that sought to allow city and Indian judges to try European offence. Earlier, only European judges could try European offence. The bill was introduced by the then Viceroy Lord Ripon. Question number 4. The act that transferred the power from the British East India Company to the British Crown in India was Government of India Act 1947, 1835, 1858, 1833. Here answer Government of India Act 1858. The Act transferred the powers of government, territory and the revenues from the East India Company to the British Crown. The Act changed the designation of the Governor General of India to that of Viceroy of India. Next question. Who among the following was not a Minister of Cabinet Mission Plan 1946? Start-step scripts, Lord Wavell, Serpenting Lawrence, Alexander. Answer option B. Lord Wavell. Wavell was not a member of the Cabinet Mission. The Cabinet Mission was a high-powered mission sent to India in February 1946 by the Attlee government, who was the British Prime Minister. The mission had 3 British cabinet members: Penting Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander. Question number 6. Who was the Prime Minister of Britain/UK when the British Parliament passed an independence bill for India in 1947? Clement Attlee, Neville Cambridge, Ramsay MacDonald, Winston Churchill. Option number Clement Attlee. Clement Attlee was the Prime Minister of Britain/UK when British Parliament passed an independent bill for India in July 1947. The Indian Independence Act was passed in 1947. The Act created 2 new independent domains, India and Pakistan. Question number 7. Which government general introduced the policy of subsidiary alliance under which the Indian ruler agreed to keep British forces in his territory? Option A. Lord Wellesley, Cornwallis, William Bentinck or Mayo. Here answer haba apanakara A. Lord Wellesley. Lord Wellesley introduced the policy of subsidiary alliance under which the Indian ruler agreed to keep the British forces in his territory. Question number 8. After the Battle of Dash in 1757, the British achieved the political power in India. A. Aliwal, Buxar, Palasi, Saragarthi. Answer haba C. Palasi. After the Battle of Palasi in 1757, the British achieved the political power in India. The Battle of Palasi was fought in northeastern India on 20 June 1757. Question number 9. In which of the following years was the Indian Independence Act passed by the British Parliament?
1945, 1942, 1946, 1947. आंसर आपनकर 1947 सेटा ही लिखा है एक्सप्लेनेशन है बेसी मु किछि डिस्कशन करूनी. Question number 10. In which of the following years was the Cornwallis Code enacted? 1857, 1793, 1805, 1723. Our answer above B, 1793. The Cornwallis Code was a body of legislation enacted in 1793 by the East India Company to improve the governance of the territory in India. The code was developed under the guidance of Charles Marcus Cornwallis, who served as governor of Bengal from 1786 to 17. Which of the following statement is correct? In 1774, the Asiatic Society was founded by Sir William Jones. In 1775, the Sirajuddaula was defended in the Battle of Plassey. In 1776, the first railway service began from the Bombay to Thane. In 1793, the Cornwallis Code was enacted. अपना आंसर आवर डी. In 1793, the Cornwallis Code was enacted. तो यहाँ से किसी व्यक्ति की एक्सप्लेनेशन देनी नहीं. Now, question: which of the following princely state was annexed by the British under the pretext of the misgovernment of the Nawab? Udaipur, Awadh, Nagpur, Satara. Answer of B, Awadh. Awadh was annexed by the British under the pretext of misgovernment of Nawab. Awadh was annexed on the pretext of government existing Nawab Wajid Ali Shah. Which of the following act was enacted in British India in the year 1878? India Contract Act, Transfer of the Property Act, Vernacular Place Act, East India Stock Dividend Redemption Act. Answer of C, Vernacular Place Act. The Vernacular Place Act in British India law enacted in 1878 to curtail the freedom of the Indian language, that is non-English place. Question number 14. Whose proclamation of November 1, 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of the British monarch through a Secretary of the State? Kings Louis, Kings Philip, Queens Victoria, Queens Elizabeth. Answer to C, Queens Victoria. Queen Victoria's proclamation of 1 November 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of the British monarch through a Secretary of States. Question number 15. In 1877, which of the following viceroy organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress in India? Lord Lytton, Ripon, Miklo, or Dufferin? Answer of Lord Lytton. Kaiser-e-Hind means Empress of India was the title given to Queen Victoria in 1877 in Delhi Darbar of Viceroy Lord Lytton. The capital of British Indian Empire was transferred from Kolkata to Delhi in 1911, 05, 07, 09. Answer of 1911. Lord heading to 1910 to 1916 CA को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है वैसे एक्सप्लेनेशन दो नहीं. Question number 17. By which British statute were Indian representative for the first time allocated seat for election in India Legislative Council? Government of India Act 1883, Indian Council Act 1892, Government of India Act 1915, Indian Council Act 1861. Answer of B, Indian Council Act 1892. The Indian Council Act 1892, the Indian Council Act 1892 brought by the provision of the bringing additional member into the Legislative Council through the election. Which law was impressed in India during the command of General Dyer? Preventive detention, discrimination law, civil law, or martial law? Option D was martial law.
The Rowlatt Act, Black Act, was passed on March 10, 1919, authorizing government imprison or confine without trial any person associated with the seditious activities. In order to craft the East India Company understrained commercial activity and bring about some order in the territories under the company control, the British Parliament enacted a series of laws, among which of the dash to Charter Act 1813, governed by India Act 1833, Regulating Act 7080, Regulating Act 7073, and Sub-ordinate D 7073. In order to curb the undertrained business activity of the East India companies, merchant, and to bring the some out of the areas under the control of the company, the British Parliament enacted a series of the laws, the first of which was Regulation of 1773. As a last question, who among the following was a great advocate of English education in India? T.B. Macaulay, Jonathan Duncan, William Jones, Warren Hastings. Answer of T.B. Macaulay. English became the official language for the government and court in the 1835, and it was chosen. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखिबा हिस्ट्री मैराथन क्लास। जदि आपण एसएससी ओएसएससी ओएसएससी ओपीएससी रेलवे टीचिंग जे कोनोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछनी, निश्चित भाव में आपण मन को हेल्पफुल रहिबो। देखंतु ए हिस्ट्री मैराथन क्लास रो उद्देश्य होची जहाँ नोटिस आम जानी पाइलु जे आरआई आपनकर गोटे परीक्षा तापर स्किल टेस्ट हम ता अर्थ आप गोटे परीक्षा क्रैक करके आप जॉब टी पाई परिबे। तेणु आमर आम मोटिव है प्रायतः गोटे दिन आम ना मैराथन क्लास आणबू। एते कौन ना आप कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होला बेले आम क्लास आनछु। बारंबार परीक्षा जो प्रश्न पड़ुची से आम आलोचना करवा। 60टा बछा बछा प्रश्न ता सहित विवृत्तिमूलक उत्तर जहाँ बुझे आपण मान सहज हम। तेणु समस्ते प्रथम चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करनियंतु है। तेणु आरआई परीक्षा आम जदि भाभी नियंतु आपनकर एप्रिल मे जून बेलू हो परीक्षा एबेट आम जब मैराथन कर चलवा निश्चित भाव में सब क्वेश्चन कवर कर देथिबा आ किछि बाकी रहिबनी आम आराम से परीक्षा क्रैक कर परिबा है। तेणु चलतु स्टार्ट करिया मैराथन क्लास। हेलो पिला माने बहुत बड़े इनफॉरमेशन हम पाखरे अछि जे हमर आम पाखरे ना आर्यांतर स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोटा कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी हेरिटेज एंड कल्चर तार एबे अवेलेबल हो जाय। आपण मन चाहिले आपण मन एटा को बहुत भल भाव पढ़ी एग्जाम क्रैक कर पारे। केमिति देखंता कहूँ एटा होची आपनकर मेरिट बूस्टर कंटेंट है प्रिपेयर बाय टॉपर एंड एजुकेटर इजी फॉर टाइम सेविंग एंड रिवीजन। बुझी पाले बहुत आपनकर टाइम सेव हो आपनकर रिवीजन भी हो। सेकंड गला कौन सी मल्टीपल वे किसी धरिया दरकार नहीं। एते भल जिनस कौन है नोट अच्छी इमेज एंड इन्फोग्राफिक्स अच्छी आपनकर एक्यूरेट फैक्ट्स भी अच्छी। आपण एग्जाम हॉल डिमांड को क्वेश्चन पड़ी छोड़ा भी आपण एडी हाईलाइट है। मेमोरी बूस्टर माने माइंड मैप भी अवेलेबल अच्छी बुझी पाले। तेणु आपण ए जो सिलेबस देजी ताको ऊपर संपूर्ण भाभी चिंदी कि से माने ए बहिटी बनै चंदी रिवीजन पर्पस रे हला। देखिबे आपण देखंतु टोटल कह गले ये 34 ये हो बेसिक इन्फॉर्मेशन ओडिशा एटा हो 35 टोटल चैप्टर रही छी हला। आपण माने देखंतु एठी रेड कलर रे आपण को पेड कंटेंट अछि आ ग्रीन कलर रे आपण को फ्री कंटेंट अछि। वो बहुत गुडे फ्री कंटेंट आपण को पढे देछि हला। ऑलरेडी गोटे वीडियो आपण को आगु में इन्फॉर्मेशन देबी कोठी पढे छी डिटेल रे हला। जोटा पेड कंटेंट अछि आपण माने पेड को भी एक्सेस कर परिबे। किमते एक्सेस करिवे तार मो इन्फॉर्मेशन अछि तासले किछि एडिशनल बोनस भी दोछि। देखंतु टोटल कंटेंट आपनकर 15 आवर हबो हला। ओडिशा सिलेबस पता 100% कवर हो जिवो। आपण एई गुटे परीक्षा ने ओएसएससी जले आगु जे कोन से एग्जाम आसीबो ओपीएससी एसो भी आसीबो बहुत गुटे एग्जाम आसीबो तापे आपण हेल्पफुल रहिबो बुझ पाले ने। सेकंड कथा कोन देखंतु वीडियो रेडी हे के टोटल 35 चैप्टर रा हला। केवल मते अपलोड करिवार अछि किंतु सेटा सब अपलोड हो आपनकर प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे केबे मते पब्लिक होबनी हला। जोडा फ्री अछि सेटा आपण पब्लिक रे रहबो आपण देख परिबे।
केमती रोचे देखो आपंकर समरी जो आप क्लास हो समरी नोट मुझे देदेवी 12टा MCQ आपको 35 डेज पे मिल माने 35 डेज आउ 12 MCQ इज इक्वल टू 420टा MCQ मिलगला आपको ओडिशा 360 डिग्री ई बुक फ्री रे मिलबा आपको जोटा कि कॉस्ट अछि 50 रुपीस बट एटा फ्री मिलबा 35 वीडियोज प्राइवेट यूट्यूब एक्सेस मिलबा आपको ना तापर बाकी रहला प्राइवेट टेलीग्राम एक्सेस मिलबा क्विज एंड नोट्स पे मिलबा आपन टोटल प्राइस होचे 70 रुपीस बट 50% डिस्काउंट है 35 रुपीस माने गोटे वीडियो कॉस्ट टंकाटे माने गोटे छुआ मध्य अफोर्ड करि परिबो हला आपन क्यूआर कोड स्कैन करके मते ए नंबर व्हाट्सएप कले मु आपन को जे देखि वेरीफाई पेमेंट करबी आपन मते स्क्रीनशॉट सेंड करबी मु आपन स्क्रीनशॉट सेंड करबी करसला पर आपन माने निजे सब एक्सेस कर परिबे हला देखंदो ऑलरेडी मु गोटे क्लास नै जे 7 घंटा 34 मिनिट रो एटा सब मैक्सिमम पिला देख सारणी आ बहुत जण परचेज भी कर सारणी से माने बहुत हैप्पी होचंदी जे कंटेंट भलो अछि बोली हला ठीक अछि आपन मन चाहिले भी आपन माने परचेज कर परिबे पेड वीडियो आपन ए एग्जाम ने बहुत गुड एग्जाम पे हेल्पफुल होबा हमर ओएससी को सिलेबस धरि चलंतु किंतु बहुत गुड एग्जाम आपन हेल्पफुल रहबा हला आज जति ए कंटेंट भल लागला निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच Question number 1. In which year was the office of the first Accountant General established in India? 1858, 1855, 1890, 1867. Answer of A. 1858. Explanation kochi the office of the first Accountant General was established in India 1858. This year the British took over administrative control of India from the East India Company. In 1860, Sir Edward Domunam was appointed as the first Auditor General. Question number 2. Which of the committee among the following was formed in Bombay in March 1990? Hunter Committee, Khilafat Committee, Sargent Committee, Sapru Committee. Answer of Khilafat Committee. In March 1990, a Khilafat Committee was formed in Bombay. Thus, the grounders for a country-wide agitation were prepared, and all the Indian Khilafat conference was held in Delhi in November 1919, and call was made to boycott the British goods. Okay. Question number 3. Which of the following act enacted the monopoly of the East India Company over the trade with India? Regulating Act 1793, Charters Act 1830, 1833, Regulating Act 1773. Option B answer Charters Act 1830. The Charters Act 1853 abolished East India Company's monopoly of the Indian trade. 2. Under the Government of the India Act 1858, the British Parliament abolished the East India Company law altogether and took responsibility of ruling India directly. Question number 4. Indian University Simon was set up in which of the following years? 1902, 1897, 1882, 1909. Answer number 1. 1902. The Indian University Commission was a body appointed in 1902 on the instruction of the Viceroy of the Lord Curzon, intended to make recommendations for reforms in university education in India. Question number 5. The Swadeshi movement was started in India during the anti-Bengal partition, the fast known corporation movement 1919 to 22, the Champaran Satyagraha of Gandhi, the protest against the Rowlatt Act. Option A about anti-Bengal partition agitation. Swadeshi movement started in India anti-Bengal partition agitation. It started at Kolkata Town Hall, Bengal on 7th August 1905. Boycott movement was also launched. With it, the Khilafat and non-corporation movement took place in 1992-22. Question number 6. To which of the following event Lord Curzon is related? Partition of Bengal, setting of the Durand Commission, Bhutan War, introduction of the system to budget. Option A. Partition of Bengal. Partition of Bengal in 1905. The partition of Bengal was announced in July 1905 by then the Viceroy Lord Curzon.
In which of the following years did India came under the direct rule of the British Crown? 1868, 1888, 1878, 1858. Our answer about 1858. The Crown rule or the direct rule by the British on the Indian subcontinent remained from 1858 to 1947. The area under the British control was called British India, and the area under indigenous rules also known as the princely states. The Governor General of India was given the title of the Viceroy for the first time in 1859, 58, 56 or 57. Instead of B, 58. The Government of India Act 1833 converted the title into the Governor General of India effective from 20 April 1834. The title Viceroy and Governor General was first used in the Queen's Proclamation appointing the Viscount Canning in 1858. In which year did Lord Curzon order the partition of the Bengal? 1905, 1930, 45 or 15? Answer of A, 1905. In 1905, Lord Curzon ordered the partition of the Bengal to separate the large Muslim eastern areas from the largely Hindu western areas. Which of the following events did not occur in 1990? The Jallianwala tragedy place, Montpellier Thames Law reform was announced, partition of Bengal took place, Rawala Tax was passed. Answer of C, partition of Bengal took place. Partition of Bengal did not take in 1919. The first partition of Bengal was administrative reorganization of the Bengal presidency carried out by the British Raj. Next question: which Indian personality was given knighthood by the British monarchs but returned it after the Jallianwala massacre? Rabindranath Tagore, Motilal Nehru, Gopal Krishna Gokhale, Aurobindo Ghosh. Answer of Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore returned knighthood after Jallianwala massacre. Amar Sonar Bangla, the national anthem of the Bangladesh, was composed by Rabindranath Tagore, Rabindranath Tagore, Devendra Tagore, Rabindranath Tagore. Answer of Rabindranath Tagore. Amar Sonar Bangla, the national anthem of Bangladesh, an ode to the mother Bengal. The lyrics were written by the Bengali polymath Rabindranath Tagore, while the melody is derived by the baul singer Gagan Harkara e Ami Kathai Pavotare said to the Gagza Tal. Next question: who among the following was responsible for the partition of Bengal in 1905? Lord Mayo, Canning, Ripon, or Curzon? Answer: Lord Curzon. Lord Curzon was responsible for partition of Bengal. Okay. Moved by the Swadeshi movement, Das painted his famous image of the Bharata Mata, portraying her as an ascetic figure. Satyanath Tagore, Rabindranath Tagore, Jyotirinath Tagore, Dwijendranath Tagore. Answer number B, Abanindranath Tagore. Moved by the Swadeshi movement, Abanindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata, portraying her as an ascetic figure. Bharat Mata is an work painted by the Indian painter Abanindranath Tagore in 1905. In which year the partition of Bengal carried out by the British Viceroy Lord Curzon? Japan answer 1905. See same question also repeat it. Same question ଟିକେ ଭୁଲି ପଚାରିଛି same ଜିନିଷ. Who was the Governor General of India during the first Anglo-Sikh War? Lord Cornwallis, Lord Hardinge, Lord Dalhousie, Lord Canning. Answer of Lord B, Lord Hardinge. Lord Hardinge was the Governor General of India during the Anglo-Sikh War. Next question: the Sati Pratha was abolished under the Governor Generalship of Dash. Lord Ellerboth, Lord Auckland, Lord Metacoxway, Lord William Bentinck. Answer number D, Lord William Bentinck. The Sati Pratha was banned in then the Governor General Lord William Bentinck in 1829. It was said by the state system, which is
burning alive windows of the Hindus, developing the feelings of the human nature. It was declared illegal and punishable by the criminal courts. The policy of security cell is related with Warren Hastings, Lord Dalhousie, Henry Lance, Lord Hastings, and Sareva Warren Hastings. The policy of the security cell related to Warren Hastings. The thumb of Lord Cornwallis is that Ghazipur, Balia, Varanasi और गोरखपुर Ghazipur. The thumb of General Lord Cornwallis is located in the Ghazipur, a small town in the eastern part of the Uttar Pradesh. Last question: which one of the following pair is not correctly matched? और मैंने अभी तो देखो कोटा मैच होनी आपन का टाइम होते गला आंसर अबाउट सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग passing the Charter Act 1933.